नमस्ते, मैं हूं अफजाज शेखर आजाद और आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज। खालिस्तान को लेकर के, जस्टिन ट्रूडो को लेकर के और भारत कनाडा के संबंधों को लेकर के आए दिन बहस होती है, चर्चे होते रहते हैं और खालिस्तान को लेकर कोई ऐसा दिन गुजरता नहीं है जब कोई न कोई विवादित बयान सामने नहीं आता हो। आज भी खालिस्तान के नेता जो है पन्नून, उनकी एक धमकी भरा बयान आया है। उन्होंने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। ये जो तमाम डिप्लोमेटिक विवाद है, इन सबको आज हम जांचने की, परखने की और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कनाडा से खास मेहमान जुड़े हैं, आदित्य झा सर, जो कि कनाडा में काफी सम्मानित हैं, ऑर्डर ऑफ कनाडा से नवाजे जा चुके हैं। कई देशों में इनका कारोबार है। तो आज हम तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे भारत और कनाडा के संदर्भ में। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपका, स्वागत करने के साथ, कि जो डिप्लोमेटिक रिफ्ट है भारत और कनाडा के बीच में, आपको क्या लगता है ये किस दिशा में जा रहा है? और कानून की जो आज भी एक धमकी आई है, राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है, तो फिर कनाडा की सरकार आखिर इन धमकियों को क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच मान करके कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? क्या या सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच ही मानती रहेगी इसको? कानून तो मुझे लगता है ये एक जिस तरह से देख रहे हैं हम यहाँ पे, आप देखिए, एक निज्जर चला जाता है। इट वॉज अनफॉर्चुनेट। जो क्रिमिनल था, इसका बैकग्राउंड पता था, क्रिमिनल बैकग्राउंड है। बट वी इन कैनेडा बिलीव that everybody has a right of due process and you cannot go and kill anybody. We all believe, even though we know that ample evidence that he was a criminal. Or here we have Pannu, who can do hate statements. इसको उड़ा देंगे, airlines का ऐसा हो जाएगा. And what he does is he's talking about Canada related, but he's living in the United States. So I think, I don't know what is Indian diplomacy going to do. Indian state, India itna bada country hai. Why can't they ask that if somebody did that thing against any US assets or Canadian assets, what would be the reaction? So I, as a civilian, I'm going to leave that to that we are very disheartened. We think it is a very much double, triple standard and despicable state of affair. A float of Mrs. Gandhi is displayed openly in Vancouver and Toronto, depicting a lady being killed by two Sikh armed guys, and that goes as a freedom of expression. A posters across Canada, kill is the word, kill Indian High Commissioner, a diplomat of one of the largest countries, kill Consul General of India, and that nobody does anything. So what does it tell you? It is a very, very dirty political game. And I think, who am I to say what India should do? But India should and must do what it should do. It should not worry about if this is the state of affair. So each one for themselves. Let India do what is good for them. Let Canada is behaving in a very despicable manner. How will it be solved? This government has to go. But our fear, we the Hindus, Canada-loving Hindus, Canadians, we think this problem is not going to go away even after this government goes away. It will lessen because Khalistanis have already circled. These are cowards. Definitely. Tell me one thing, Avijay, and I'm answering a little longer. Tell me one thing. Khalistan is a piece of land, right? They're asking. Where does that land belong to? Tell me, where does it belong to? Yes. India, right? And ideally India, and in bigger part in Pakistan. Yes. Maharaja Ranjit Singh, capital was Lahore, and he had a big piece of this. It was a Sikh kingdom, and so there were thousands or hundreds of them were in India, and jab sabka vilay hua hai, then they all came together. So if they want a piece of land, why the hell they do anything in Canada? If they are man enough, they should go to India.
They should at least fight like Taliban. They should carry rocket launchers. Go to Pakistan. Go to somewhere. Go to Burma. Somewhere. Go and fight. Maybe Indian army is sitting very much idle. They will deal with them. How things needs to be dealt. So these are cowards just making statements, and they think something will happen. And what government is doing, the government of Canada is doing, they're doing two things. One is they're endangering safety and security of Hindus in Canada. And second is, I have a very big worry. And I hope through your channel or other places you guys can say that we worry these forces will do something very nefarious. They will do something against the Sikhs in India and project it that look at this Hindu majority country, not loving Sikhs, and they are doing this. So I hope, my worry is more that anything happens to Sikh brothers and sisters in India, we should all voice our opinion that we are not going to tolerate. Canada, we will have to take care of that. But anyway, sorry, long answer to your question. यस डेफिनेटली आपने हिंदू का जिक्र किया और जाहिर सी बात है हिंदू बहुत पीस लविंग कम्युनिटी हुआ करता है, चाहे भारत में हो या फिर अमेरिका में हो, कनाडा में हो या फिर पूरी दुनिया में, अपने काम से मतलब। लेकिन खालिस्तान का आंदोलन है, ये हमने देखा कि हिंदू मंदिरों पे हमले हो रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके खिलाफ लिखे जाते हैं, अपशब्द बड़े लिखे जाते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि कनाडा में जो ये खालिस्तान का फैक्शन है बहुत छोटा फैक्शन होगा, लेकिन कनाडा में हिंदुओं की आबादी करीब 1.5 मिलियन है, 15 लाख से ज्यादा की आबादी है। तो क्या कनाडा के हिंदू या फिर जो सिख जो है जो प्रो इंडिया है, वो इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई विरोध प्रदर्शन या फिर सरकार के लेवल पे? इनका वर्चस्व आप कितना देखते हैं, जो प्रो इंडिया है, हिंदू है, सिख है, इनका वर्चस्व दिखता है, थोड़े दिन की बात है, अब वॉच करिए। एक बिजनेस पर्सन लाइक मी, आई एम ऑर्डर ऑफ कनाडा रिसिपिएंट, आई हैव honorary doctorate I got from Ryerson University, lifetime achievement award, hall of fame invested. अब हम सब, you can see and hear the anger and anguish in my voice. Yeah. And I am just a one person, but you can amplify it by hundreds of thousands because people are feeling like that. We have a weakness as a Hindu. What is our strength is our weakness. Our strength is do your job. Think about your family. Be a good citizen. Be peaceful. And you think these are nuisance people. Let's stay away. We tell our children, hey, that guy is stupid. That is a nuisance. Stay away from them. But now the time has come, no more. But we are not going to do the same thing what they do. They are provoking us. Yes, yeah, definitely. India, I am not going to answer. Let India deal with this. And I am quite, I'm hopeful and quite confident India is strong enough to deal with that. If they say something about Narendra Modi, let Narendra Modi deal with this. And people like yourself deal with this. But we are going to voice our opinion and do actions to protect the Hindus and more than that, protect Canada. Because these guys are hurting Canada, because Canada's social calm is being just a second. Huh? Yeah, yes. Canada's social calm is being hurt. Canada's standing, global standing. Do you know one thing? It's amazing that how shameless our politicians are. The foreign minister of the current ruling party, Mark Garneau, he said that because of Justin Trudeau, the global standing of Canada has come down. Yes. This was the past foreign minister of his party. The 40 plus MPs are saying, hey, you leave, enough. The former Premier of British Columbia, the MP of the Liberal Party, the health minister of that, he says such unkind things because of what Justin Trudeau believes. What can he do? A beautiful country like Canada is
held hostage to the visceral hatred of this man, our Prime Minister. He has a visceral hatred for India, and I think he really doesn't like Mr. Modi. And we are all Hindus here outside, caught in between. But we are going to now, the next election is coming. Our number is significant, Abhijat. In this country, 500 to 5,000 votes can change the outcome of the election. Yes, yes. Now is the time we have to be vigilant. We are going to target number one, every Khalistani member of parliament. We are going to target jihadi parliaments, and we are going to support people. There are 20, 25 MPs. We are going to form a Canada caucus, and we would like them to be elected. Those people who love Canada, who love the basic values, principles, and the interest of Canada. Those people who will stand, say, diaspora politics, the stupid diaspora politics should not, and they will not allow it to be influencing Canada's bilateral and multilateral geopolitical stance of Canada. And those kind of sane MPs will come. Thank God, Donald Trump has come to the south, and he has clearly said that he knows these nefarious guys. They're going to do everything. Just watch, you know. ओके ओके आप मेरा सवाल यहीं पे कि चुनाव आने वाले हैं। पिछले कुछ दिन पहले कनाडा के जो मुख्य विपक्षी नेता हैं पियरे पोलिवरे, उन्होंने भी शायद पियर पोलिएव, यस, उन्होंने दिवाली कार्यक्रम में जाने से शायद मना कर दिया, ऐसी रिपोर्ट आई थी। और उनका भी जो निज्जर हत्याकांड को लेकर के काफी सख्त एंटी इंडिया स्टैंड आया था। तो कनाडा के जो भारतीय मूल के वोटर्स हैं, उनका स्टैंड आने वाले चुनाव में किसकी तरफ होने वाला है? वो किस तरफ से अपने नेता का चुनाव करेंगे ताकि सरकार जो बने उसमें कम से कम एंटी इंडिया मूवमेंट या हेट्रेड इंडिया ये शब्द ना हो? So let me parse your question in two parts. Like we have Justin Trudeau is complete no. Yes. Jagmeet Singh of NDP is a known Khalistani himself, is a leader of the party. Yes, yes, yes. And Hindus are conservatives by and large. They are conservatives. I think the preference of Hindus will be to vote for Pierre Poilievre. The Diwali, cancellation of Diwali function, I don't think it was done at the level of the leader of opposition. The Khalistani nexus, they have overtaken the campaign cabinet of the Conservative Party. And they were the one who took it, and then they had to do the last minute, what should we do? And then they did do the Diwali function. You guys don't know, but they did do the Diwali function. Yes, yes, yes. Yeah, we know that. And it's a minor event. It was more like a lipstick type thing on a pig. They did it. And the same Khalistanis were doing it. And they had this funny thing is Bandi Chor, prisoner's release date of a great Guru Hargobind Singh. He was released. He took with him 52 kings with him. And it so happened that day, as he reached the Amritsar, there was Diwali day and there was celebration. Yes. Guru, since him, after that, Guru Tegh Bahadur, Guru Gobind Singh, everybody celebrated Diwali. Diwali is done on a particular day. These two have no connection. We have all respect for that event, and this has started now. It's a leftist, this urban Naxals, leftist, Khalistanis, they're all building this narrative. How do you diminish Hindu festivals, Hindu culture? How do we separate Khalistan separate from Hinduism? They don't know. Hinduism, there's nothing called a typical religion. Hindu is not a typical religion. Yes. There's no one book. There's no one God. We are like a
the way I say, being a computer guy, it's a open architecture, plug and play. Any device will go and plug into that. Yeah. 500 years, Sikhism started for right reasons. And the Guru Granth Sahib, it has mention of Lord Ram, Lord Krishna. The Hindu culture is the fabric from which they have cut that Sikhism cloth. Eldest son of a Hindu family used to be sent as a Sikh. That kind of reverence to the Guru. Punjab, many families, no less than a temple, Hindu temple, when they visit Gurudwara. So, first part, the answer to your first part is the Diwali function, the game was played. It was not, I think, I don't have exact, that Pierre Poliev was there, but he's surrounded by these Khalistans. And so for our vote, it will go to conservatives, but conservatives have evils sitting there in conservative parties. So we will not say that we will choose lesser evil. Evil is an evil, no lesser evil. So out of his party, these evils which we will identify, we will not vote for them. And we are going to actively work for chosen member of parliaments from his party, and we are going to form a Canada caucus, a caucus of 20-25 member of parliaments. By the way, that is a very big force. Any country, even in India, if you had a 25 member parliament in 540, still is a big number. Yes, yes. So 25 MPs we will have. We will have 3-4 issues on which we will say that they will not dilute their stand. They will stand for it. And they will defy even the party whip because they belong to Canada caucus. A caucus of parliamentarians for the interest of Canada. And we Hindus, we are Hindu first. And then not and for Canada. India will take care of it. Our love is there. Our emotional love is there. Everything is there. We wish all the best. We do our things individually, collectively for the betterment of India. But if it comes to issues of Canada, Canada is first. आपने सर कनाडा कॉकस बनाने की बात कही है, तो क्या ये बन चुका है या बनाने की प्रोसेस में है? और क्या हिंदू कम्युनिटी के लोग इलेक्शन में खड़े होकर के कनाडा की संसद में जाने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ताकि रिप्रेजेंटेशन मिल सके और फिर इन तत्वों के खिलाफ एक प्रभावी आवाज हिंदू कम्युनिटी की तरफ से उठाई जा सके? क्या ऐसी कोई धारणा है, कंसेप्ट है? बिल्कुल है। हम लोगों ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, उसका नाम है Coalition for Canada. Okay. And there are 4-5 issues on which this coalition, it will be propelled by the majority Hindus, but we are going to, it's a coalition of Jewish people, others who love Canada, and that will help elect the Canada caucus, the members. I think 70-80% will be the Conservative Party members, but there could be 2-3 guys from Liberals and other party. And for us also, the second part is, this is my personal view, it is not important that the best representative of the interests of Hindus has to be Hindus. Is the values, it is the value system. If we have people protecting the right kind of values there, then Hindus are the most suitable one. Our values will be protected. We will be protected. So whether we have Hindu member of parliament or not, if they are there, that would be wonderful. But if they are not, it's not the end of the game. हमने सर एक ट्रेंड देखा है अभी बांग्लादेश में, आपको पता ही है क्या हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ काफी हिंसा हुई है। पाकिस्तान से ऑलमोस्ट हिंदुओं का सफाया कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी कई बार खबरें आती है कि हिंदू हमले हो रहे हैं। कनाडा ऑफ कोर्स इन चीजों से अभी जूझ रहा है। और इन सब के बीच भारत में अभी चूंकि 2 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, तो इस बीच में एक बयान पॉलिटिकल फील्ड में तैर रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या हिंदुओं को अब ये लिबरल मानसिकता जो है हमारी, कि ठीक है जो हो रहा है हमें उसमें नहीं जाना चाहिए, क्या अब हिंदुओं को उससे बाहर निकलना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, लिबरल रहने में कोई दिक्कत नहीं है, बट लिबरल का मतलब ये नहीं है कि तुम आके मेरे को हर्ट करो।
जी। हम तुमको लिबरल तब तक है जब तक कि हम तुमको हर्ट नहीं करें, लेकिन अपनी सुरक्षा जो हमारा इंटरेस्ट है उसको फुल्ली प्रोटेक्ट करेंगे, जो भी जरूरत होगा वो करेंगे। बांग्लादेश की प्रॉब्लम इनके योगी जी के इस नारे से नहीं चलते। बिल्कुल नहीं। मैं तो थोड़ा रेडिकल व्यू है। इंडिया शुड लाइक इजराइल, in Israel, any Jewish from anywhere in the world has a right to citizenship in India. Forget about CAA. I'm saying that Hindus from anywhere in the world, they want to come to India, they should have a place. Or India should become a transition place. We should do two things. In Bangladesh, हिंदू बाहुल जगह को मैंने तो एक ट्वीट किया था, हिंदू बंग देश। In Bangladesh, we should say it should be autonomous and carve out from Bangladesh, because the Islamic majority is not capable, does not have the bandwidth. They have no place for any minority. It's only them. They go through the phases. When they are very small minority, they will talk your talk, your talk. When they become the significant minority, then they would question your practice. Why the hell you do this? Yes. Okay, that's when your Bollywood actors will take औरंगजेब का भी वो उनका बस चले तो उसका भी चेहरा दिखा दे, ड्राइवर वगैरह उनके सिपाही सारे जो भी हैं, जो हिंदू को कैसे गलत तरीके से प्रोजेक्ट। जी जी। ये प्रॉब्लम जो है ये इंडिया का प्रॉब्लम है। आप लोगों ने इंडिया में, हमारी तो शुभकामनाएं होंगी, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। ये सही है, इंडिया में बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम उनको काटेंगे। नहीं, हमने उसको उनको भी डेफिनेटली नॉट, वी शुड नॉट इंडोर्स दैट, ऑफ कोर्स। सर, एक चीज और मुझे भी जानना है कि कनाडा की जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसको अगर आप एक्सप्लेन कर पाए साधारण शब्दों में, आसान शब्दों में, ताकि हमारे व्यूअर्स से समझ पाए कि कनाडा की राजनीति जो है, कनाडा का पॉलिटिकल सिस्टम जो है, जो करंट मौजूदा जो है, जैसे इलेक्शन अभी होने वाले हैं, तो उसका क्या ढांचा है, और भारतीय वोटर्स जो रहते हैं वो किस तरफ झुके रहते हैं, किसको वोट करते आए हैं एक झुकाव की तरह से। आप इसको जरा थोड़ा एक्सप्लेन अगर कर पाए। तो कनाडा में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सेम एज ब्रिटेन एंड इंडिया एंड हियर। बिल्कुल। So we have two house, but the upper house is a senate. Yes. And उसमें उसकी कोई इलेक्शन नहीं होता, उसका उसमें नॉमिनेशन होता है। इंडिया में तो राज्यसभा में you have elections. Yes, yes. Here we have the election by constituency. पहले होता है कि both party, three parties, उनके within party there is a nomination process. Yes, yes. Okay? And then once a candidate is nominated through election, generally, but आजकल होना शुरू हो गया कि acclamation भी होता है, तो उसके बाद typical election system से जाइए, जो he who or if she has gotten the highest vote, she goes to the parliament. So ये है, तीन पार्टी है, the Conservative Party, Liberal Party and National Democratic Party, NDP. एक चौथी पार्टी है, मोर लोकलाइज्ड इन क्वेबेक, ये ब्लॉक क्वेबेक्वा, ये बहुत बड़ा प्रोविंस है, बट वहां पे जनरली ऑफ एंड ऑन मेजॉरिटी उन्हीं की रहती है, बट दे कम टू द पार्लियामेंट एंड दे आर सिग्निफिकेंट नंबर, बट देयर फोकस इज प्राइमरली इज द क्वेबेक का इंटरेस्ट, ज्यादा उस पर ध्यान देते हैं, बट इट्स पार्ट ऑफ कनाडा। देयर इज ए लिमिट। Election financing ka rule is very good. You can't contribute more than $1,600. And a candidate cannot spend almost, I may be a little off, $100,000 Indian rupees में आप 60-65 लाख रुपया से ज्यादा आप नहीं खर्च सकते कोई candidate. And all that money, you cannot also spend your own money. You will have to raise money. And you can't get more than $1,600 Canadian, 60 रुपये से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो एक लाख रुपये करीब हुआ। 1 लाख रुपये के करीब का डोनेशन ज्यादा आप ले सकते ईच कैंडिडेट। इट्स अ वेरी वंडरफुल डेमोक्रेटिक, बट
अभी बीमारी लगी हुई है, जी एंड जी। खालिस्तान इज ए कैंसर। अब इस कैंसर को कैसे एलिमिनेट होगा? क्योंकि उसको फैलाने वाला जो है ना, ये हमारे पॉलिटिशियंस। इफ दे स्टार्ट थिंकिंग, इफ Khalistanis won't land in India, they should go to India. यस यस। What Hindus in Canada have to do with this? बिल्कुल। Why should they fight with us? They should do their पूजा पद्धति। हम तो गुरुद्वारा में, हमको उतनी श्रद्धा है। और इनकी दुकान है, ये है टेररिस्ट खालिस्तानी की दुकान, और इनका नंबर कम है। और आपका दूसरा एक और प्रश्न था कि क्यों बाकी सिख्स वगैरह नहीं बोल पाते। ये बात हमको भी आश्चर्य लगता, इतने अच्छे लोग हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, बट मेजोरिटी 90 से ज्यादा ही परसेंटेज साइलेंट सिख मेजोरिटी। दे डोंट वोट होमोजेनियसली, दे वोट कंजर्वेटिव, दे वोट एनडीपी, दे वोट लिबरल। तो बट चुप रहते हैं। जी और इस चुप्पी का उनको, उसको खामियाजा उनको पे करना पड़ेगा, हम सबको करना पड़ेगा। जैसे हिंदू भी साइलेंट है, तो वी हैव टू पे फॉर इट। जी जी जी। सर, मैं पढ़ रहा था कनाडा की अर्थव्यवस्था भी है जो लगातार डाउनफॉल की तरफ जा रही है। अभी जो 1-2 सालों में जो ग्रोथ रेट है 1% के करीब या 1.5% के करीब आ चुकी है। भारत जैसे विशालकाय देश के साथ अगर आप पंगा लेते हैं, इंडो पैसिफिक की समस्या अलग है, तो फिर आप तो अपनी अर्थव्यवस्था को शायद और आप डैमेज करेंगे। आप एक तरफ भारतीय छात्रों को लेकर के भी आप नियम बनाते हैं, नॉट पर्टिकुलरली भारतीय छात्र, लेकिन जब आप वीजा को लेकर के कुछ नियम बनाते हैं तो भारतीय छात्र इम्पैक्ट उन पे पड़ता ही है। तो आपकी अर्थव्यवस्था के लिए तो ये और ज्यादा ही खराब होगा। He does not care. ओके। He is committed to destroy this country. एंड ये तो वही हाल है, वो कबीर दास का सुना था, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाड़ी हाथ, जो घर जा रहे अपना चलो हमारे साथ। He's going to burn this house and leave. And I don't know how long and how much it will take for Pierre Poilievre to fix this place. So he has decided. What can you do? If you have some family member like that, he doesn't care. He just, Mummy, I'm just going, I'm not happy, I'm going to burn the house down. यस। जी जी जी। सर, मेरा आखिरी सवाल। डोनाल्ड ट्रंप अभी व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं, मतलब इलेक्शन जीत चुके हैं। जाहिर सी बात है, भारत और खास करके प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का एक अलग से संबंध रहा है, दोस्ताना संबंध रहा है। सो क्या अभी जो खालिस्तान का तमाम मुद्दा है, खास करके निज्जर हत्याकांड को भी लेकर के उठे, उधर अमेरिका अलग से पन्नून हत्याकांड को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में लगातार डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत भी चल रही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने से लगता है कि आपको खालिस्तान को लेकर के मामला थोड़ा शांत होगा? भारत और कनाडा के बीच, ये भारत और अमेरिका के बीच में भी जो संबंध था उसमें भी जो तनाव आए हुए थे, या फिर कनाडा को डोनाल्ड ट्रंप का उतना समर्थन नहीं मिल पाएगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो खालिस्तान को मुद्दा जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो उठाते रहे हैं? क्या बदलाव होगा ट्रंप के? ओवरऑल कनाडा को हमेशा अमेरिका का सपोर्ट मिला। ओके और जस्ट थिंक लाइक दिस, एक भाई नालायक भी होता है, जब पिटता रहता है तो दूसरे लोग सब खड़े हो जाते हैं। ओके ओके तो ओके। ये तो गलत फहमी हटा देना चाहिए कि दे विल abandon Canada, because also Canada and America has a relationship very deep, and dependability बहुत deep है दोनों यस कंट्री। यस। तो वो नहीं होगा। एंड somewhat is like the China का पॉलिसी, ओके। क्लैश एंड कोलैबोरेट। झगड़ा करेंगे, वो जमीन लेंगे, उसके बाद मीटिंग होगी, वो जमीन छोड़ेंगे नहीं। वो सिर्फ इंडियंस छोड़ते हैं। शिमला पैक्ट होगा, वापस कर देंगे। 1971 का वार होगा, वापस कर देंगे। ये इंडिया ही करती है और कोई नहीं करता। जी जी। ओके, सो बांग्लादेश बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे, और यदि हमारे जैसा आदमी होता तो हम तो वहां पे आर्मी ही नहीं बनाने दें। 98% ऑफ द बॉर्डर इज विद इंडिया, उनको क्या जरूरत है आर्मी की? बिल्कुल 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 सर। और म्यांमार से 2% है, तो उससे उससे उनको बॉर्डर का प्रोटेक्शन चाहिए। और बांग्लादेश वाज प्रोग्रेसिंग सो मच। ऑफ कोर्स देयर आर प्रॉब्लम। यस। एंड अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने से ये जो बहुत सारी जो स्टुपिडिटी है उसमें कंटेन होगा। लेकिन मुझे लगता है ये पन्नून टाइप का ये है, ये भी ही इज एन एसेट। आई वुड नॉट बी सरप्राइज दैट ही इज अ CIA एसेट। यस यस। I would not be surprised. यस। नहीं तो how come he can make these
bombastic Yes, sir. statements and बिल्कुल सर, not so बिल्कुल smart बिल्कुल statements, बिल्कुल। आप and still nothing happens to him. बिल्कुल चेक गणराज्य में जाकर के एक निखिल गुप्ता नाम के शख्स को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है अब कि उस पे तो मंदिरों पे वो तो हमले कौन डिफरेंट कर रहा बात है। है. बिल्कुल। I have opinion on that, ओके ओके ओके। but also because we are, I think India is not as organized and sophisticated as many of these guys are. यस आपको ये भी देखना चाहिए ऐसा क्यों हो जाता है कि एक गुप्ता जी का नाम क्यों आता है. होता है बहुत बोलने की आदत होगी, यस यस यस। बड़बोला बड़बोले होंगे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, हमसे ठीक है. जुड़ने के लिए। तो वन इंडिया ठीक पे है. आप स्पेशल शोज देखते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नमस्कार, जय ऑल द बेस्ट. बाय बाय. हिंद।